Okay, so I think we should start. It's 6:30. Let's follow and let's be punctual as we have been promising. Okay. So good evening, namaste, and welcome to all the alumni joining us live from India and from US and from other nations. It's an honor to have all of you here. I am Akshay Bajaj from 19th batch and I serve as a joint secretary of EDI Alumni Association. And on behalf of the committee, I'm honored and I thank all of you for joining us live on this beautiful evening. And it's time to make it official that Entreplexus on the Go is finally back. So today we have Mr. Paresh Gupta as our guest speaker. He's the founder and CEO of Global Center for Entrepreneurship and Commerce Foundation. He comes with 13 years of corporate experience and he's a renowned mentor to several startups in India as well as Singapore. For the first 20 minutes, he'll be sharing his entrepreneurial insights plus his vision for Viksit Bharat at the rate 2047. This session will be followed by a Q&A round of 5 minutes, and then we'll head over to Dr. Satya's discourse, and then to finally the most awaited business networking session. So let's get started. Paresh sir, the stage is all yours. Okay. Paresh sir, please unmute yourself. Yes, I was just trying to fix in the presentation so that I'm not able to present it though. Achha, here it is. All right. So, hello and welcome everyone. Thank you so much for inviting me, and I am so super honored and especially thankful to Krishan for recommending my name. And I'm already, scared and embarrassed and worried that I should not make any stupid mistakes and glitches in the flow of my conversation. But I am like that. I'm an open mouth, and my life is actually like this. That I just say what I feel like. So I don't really stop at holding things out. It's the way I have been. So crazy, stupid man. And I'll start with something very interesting that my entire family, previous generations have not seen business. So everybody was a government employee. Classic sarkari naukri is exactly what I come from. My Nandaji was a deputy secretary assembly. My father was a engineer in the electricity board department. My uncles, my nephews, and everybody in my entire family was and is a government officer. And I just suddenly so it's just so happened that I was a CBSE topper, so I topped my 12 boards, and then I went to Sri Ram College of Commerce. I ended up being one of the toppers there as well. And my dad gave me this UPSC ka form, and he said, "Beta, tum bhi sarkari naukri karoge." और मैंने चुपके से जाके I tore out that form and threw it away, and I was like, this is not what I can do, because I want to do something more, and I want to do something more creative. The thought of doing business was never there in my mind. The only thing which I thought was that let me do a good job, let me work across the globe, become an investment banker, because investment banking is what gets you the best salaries. So I went on to becoming an investment banker, and I thought, okay, after 35, I'll retire. So that exactly was the plan. I went ahead. I worked with World Bank projects, with HSBC, with CIBC London, Sutherland, US, EY, Bharat, Dubai, and as destiny would have it, if you आप कभी किसी चीज को शिद्दत से चाहो, और मैंने ऐसे बोला था, I will retire at 32, I'll retire at 32. So literally exactly at the age of 32, and it happened in such a way that I never thought it was going to happen like this. I was happily settled in Middle East. I was doing good jobs. I have done deals worth $4.4 billion as an investment banker. So I was like pretty happy. I was suddenly diagnosed with a tumor. And while I was diagnosed with a tumor, I was in the bed in the hospital, and my wife started crying in the hospital, and she said, "We don't want to have a life like this." So we spoke in the family, and within a day, we just decided that जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक इंडिया आके जीते हैं. मतलब it was just that much. It was not even sure whether I live or not. I have been through 9 months of chemo. I lost my skin. I lost my hair. I gained weight. I used to crawl on the floor to reach the washroom. And that's exactly how I literally spent that 1 year of my time. And I just came back to India thinking, देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा. And I came back here. And by all luck, as luck would have it, I was fit and fine. And then the whole idea was, so then I called up all my ex-bosses.
And I said, okay, can you take me a job? Can you take me for a job again? Can you take me? Everybody said yes. I was not expecting this. I was like, अरे एक साल का break हो गया, अभी तो कौन job देगा? And everybody said yes. I was like, this is too simple. My life can't be so simple now. I am here for a purpose. Let's do something different. And suddenly, you know, my cousin came together and I started a startup. It was called Sharp Edge Learning. And we got 3 national awards for this startup. We were the winner of Power of Ideas. We were the winner of IIT Kharagpur, IIT Kanpur. I mean, it's Pilani. We were like known for, you know, being the best startup. From the pitching award category, we were like super good. When we went into the market to sell our product, nobody purchased the product. And we were disastrous failure. So we failed big time. And you know, it literally happened that, you know, we realized that हमने बहुत ही stupid product market fit बनाया था. Market को जरूरत ही नहीं थी उस product की. So we ended up shutting it down. I burned another 40 lakh rupees in that business, and it was very sad that, you know, this the way it happened. But then the whole idea was up to jo karna. So I sat on my dad's table and, you know, sat on the desk and decided अब तो जो होगा वो इसी table chair से होगा. So I literally sat on that table and chair and decided to start from my house. We literally started as a tuition center. Okay. And Prabhanshu has seen that journey in that sense. Krishan has joined a little later, but yes, he has also been privy to that thought process and the journey. And from there, of course, alongside, I started a real estate business and a mining business, which is the family lineage. So we just thought, okay, let's take it up. So dad helped me out in building that up. So we built that, but alongside we started an education venture. Then I got my first TEDx, then second TEDx, then third TEDx, then Josh, then another TED, then more TEDs, and then the brand ambassadorship for the government, and then a lot of other things, you know. So a lot of things started falling in place. Now we have, you know, 3 different colleges with multiple students. We have pretty big campuses now. So this is one side of the business. There are other sides of business. We have now an angel network which invests in startups. We have more than 200, 300 investors lined up with us. We have actually invested in a lot of startups. I've personally invested in a couple of startups across the globe. So yes, so then we started multiple ventures. We have CUET Pro, we have NStart, we have NPro, we have GCC Pro, we have, you know, so yes, but the story actually started with all this pain. And what I want to share with all of you guys is, what are those learnings that you guys should probably know? And one thing which I've learned, so I think this session, or this is about not me, but everybody, right? All of us go through this problem, which is about networking. And my belief is that 99% jobs and 100% business happens through one thing called networking. And we don't know how to do this. We as Indians, or we, in fact, rest of the world as well, I think we are very shy people. We are always thinking about how to break the ice, how to really start that conversation, how to come out of that thought of, you know, just striking, you know, and building that thing, you know. So this is something which I felt is, I was very bad at it. When I came to India, mere paas kuch 230 connections the, right? And that was my Facebook count of 230. From there, as I grew and I started building, you know, meeting people, blah, blah, blah. So I think Facebook does not allow beyond 15,000 friends. And then you have to convert your account to a page. So I started getting this notification, you can no longer accept friend requests. Now you have to convert to a page. And I was like, oh, it sounds like a celebrity here. So suddenly I was looking at life in a very different frame of mind. And then the whole story of understanding, knowing people, meeting people started. So what I can share is what I've learned out of networking, you know, how to network, what are the key things that I've seen while people should network. This is one thing which, you know, I think we should all follow. And I would also be wanting, so in fact, Akshay, I am taking this privilege to, you know, cut down my talking time and increase the Q&A time, and don't want to restrict it to 5 minutes. I want to talk to people. I think that's the fun of, you know, these sessions, rather than, you know, just having, you know, just a monologue presentation. So my take is, I think 2-3 things which I can tell you. And, you know, I had a presentation and I designed this presentation, but I think I want to share a couple of stories with all of you guys. So the thing is that, you know, we as Indians do not really think about building networks. We are all there to pull each other's legs. We take pride in fact, youngsters especially, you know, we take pride in pulling down people.
हम बहुत नेगेटिव है एज अ कंट्री, हम लिटरली एक सेडिस्टिक कंट्री है। हमें बहुत मजा आता है, हम रेड लाइट जंप करके किसी को क्रॉस करके जाते हैं ना, तो वी फील अरे हमने तो रास्ता काट के अलग चला लिया। हम रोड पे सब लोग सही से लाइन में चल रहे होंगे, हम साइड से निकल करके आगे जाएंगे और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने कर दिया। वी आर अ वेरी सेडिस्टिक नेशन, हमें खुशी नहीं मिलती दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने में। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग इन यार लेट्स स्टार्ट लुकिंग डिफरेंटली, and if I can collaborate and find an opportunity to work with this guy, even if he's in my competition, can you go and give a pat on the back to the competition that you have? I think it's a very big thing, but you should all do this. मतलब मैंने देखा है कि मैं जितने भी लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरे सारे, और मैंने देखा इतने सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं बिजनेस में बिकॉज फाउंडर्स की आपस में नहीं बनती। उनका लड़ाई इज सच अ बिग रीजन। पीपल डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट अदर पीपल। सो लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखें। दिस इज वन थिंग विच आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ। सुपर। और मेरा एक स्टेटमेंट है जो मैं हर बच्चे को सुनाता हूँ, विच इज या तो लोग दुनिया में अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं, बुरा कोई है ही नहीं। अगर कोई आपको बुरा लगता है उससे आप दूर हो जाओ, ऐसा समझो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो लोग या तो अच्छे होने चाहिए या बहुत अच्छे होने चाहिए, और लोगों को खूब सारा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। एंड देयर इट डज नॉट टेक यू एनीथिंग टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू एनीबडी। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। आप कहीं गए, आपने किसी को बोला यार आपकी शर्ट ही अच्छी लग रही है, आपके बोलने का तरीका ही अच्छा लग रहा है, आपका हेयर स्टाइल ही अच्छा लग रहा है, आपने जिस तरह से ये किया, आपका विजिटिंग कार्ड ही सुंदर दिख रहा है। मतलब आई हैव गिवन कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस एक्सटेंट एंड पीपल लाइक इट। आप किसी लड़की को भी बोलोगे ना तुम सुंदर दिख रही हो, कोई बुरा नहीं मानता। मतलब आप सही तरीके से बोलोगे, बट आराम से। मैं तो बहुत लोगों को कॉम्प्लीमेंट किया है, यू आर अ गुड लुकिंग गर्ल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी आर ऑल हैप्पी अबाउट इट। सो यस, most important is give compliments, give good compliments to people. That's my first lesson out of this. Number two is मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि और मैंने 2-3 फोटोज निकाल के रखी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेहुल भानावत है ये बच्चा ना, राजस्थान का एक गांव का बच्चा है। so this kid came to me and said sir चप्पल घिस गई नौकरी ढूंढते ढूंढते, एंड मेरे को नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा तू एक काम ट्राई कर, वो है लिंक्डइन और प्रोफेशनल नेटवर्किंग, और जाओ और लोगों को फॉलो करना शुरू करो, पर्पसफुल नेटवर्किंग करो। सो देन द नेटवर्किंग कम्स फ्रॉम दिस थॉट ऑफ पर्पसफुल नेटवर्किंग, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग। दैट यू आप पहले लोगों को ढूंढिए, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करिए। सो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा लेसन है दूसरे लोग, अदर पर्सन, नॉट यू। डोंट बी सो मच इंटरेस्टेड इन यू, बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जितना आप दूसरों में इंटरेस्ट दिखाओगे, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। सो आप पहले बोलो मैं किसको क्या दे सकता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूं, मैं हेल्प कर सकता हूं। वॉट एवर यू कैन डू फॉर समबडी इज द क्रक्स ऑफ योर बिजनेस रिलेशनशिप। आप किसी आईएएस ऑफिसर को पटाना चाहते हो, पहले आपको कुछ सर्विस डिलीवर करनी पड़ेगी ना। यू हैव टू प्रॉब्ली से मैं आपके लिए गाड़ी चला दूंगा यार, आई एम एब्सोल्युटली ओके। आप जाके बस उनको बोलते आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तारीफ ही कर दो, आपका काम हो जाता है। एंड आई हैव सीन दैट हैपनिंग जेन्युइनली। सो आई टोल्ड दिस फेलो दैट तुम जाओ लिंक्डइन पे जाकर के नेटवर्किंग शुरू करो। Believe me, the guy who could not get a job for almost a year, in 3 months, he had 12 job offers and 12 job offers in 3 months just to this young fellow. And from there, he got selected in final 3, went to EDI Bangalore. And then believe me, उसके बाद कम से कम भी 5 जनों की नौकरी मेरे रेफरेंस पे इसने लगवाई है। क्योंकि मैं बोलता था मेहुल भानावत ईवाई के अंदर है, यहाँ पे सीनियर एसोसिएट बन गया, जाके उसको सीवी भेज दो। दैट पावर ऑफ रिलेशनशिप टू नेटवर्किंग इज एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। तो आप ये समझो कि नेटवर्क 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 करते जाओ, आप देखो कहां पहुंच जाओगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता, स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क। सो बेस्ट स्टूडेंट नेवर गेट्स द बेस्ट जॉब, व्हाट समबडी गेट्स बेस्ट जॉब इज ऐसा सच्चाई है, बेस्ट नौकरी मिलती है उनको जो बढ़िया नेटवर्क करके निकल जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। सेम इज द स्टोरी विद सागर पारी, ही इज एन इंजीनियर एंड आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम। और इसके बेस पे मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूं कि आपको ना एक थॉट रखना पड़ेगा, वह दुनिया का ही तेल लेने। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, और अपने बारे में इस हद तक सोचिए कि यार कोई आपके बारे में क्या सोचेगा उसकी परवाह मत करो। Right? You rather be what you are. Go out and tell the world. So speaking is silver, silence is golden. ये मेरी तरफ से absolute bullshit rule है। मेरी तरफ से let silence be golden. Speaking has become platinum. अगर आप बोलोगे नहीं ना किसी को, you can believe me, nobody is bothered in you at all. किसी को आपके 2 पैसे से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या करना चाहते हो। यार जाके बात करो।
So now this kid went to, so मैंने कहा जाके conferences and meetings attend किया करो. इसने अपने ये he's from बीकानेर, तो बीकानेर से उसने बैग टांगा and वो चला गया पुणे conference attend करने के लिए. And that was a cloud computing salesforce.com की conference थी. The salesforce.com CEO stopped him at the entrance. He said, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लगता है गलत जगह पे आ गए हो. तुम तो छोटे से बच्चे हो. He said, sir, I've come all the way from Bikaner. I just want to attend this conference and blah blah blah. And believe me, he marketed, networked in this entire conference. And by the end of that conference, salesforce.com का CEO announces in the middle of this conference कि I have found a student leader for salesforce.com who's sitting right here. And अकेला बच्चा, अंधों में कांडा राजा. Again, my one classic analogy, मैं बोलता हूं अंधों में कांडा राजा से अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती. आप ऐसी जगह पहुंचो जहां आपके जैसा कोई नहीं हो ना, आप बहुत अच्छे कहलाओगे और फर्क नहीं पड़ता. आप इतने ज्यादा हाई कंपटीशन में जाके करोगे क्या? मैं लंदन के कैनरी वॉर्फ में जाकर के आई एम जस्ट अनदर पर्सन इन वन कॉर्नर हु केयर्स फॉर मी, राइट? आप ऐसी जगह जाओ जहां पे आप राजा बनो. So this kid was the only student. He became the student leader for salesforce.com. And then he called me after 3-4 months and he said, sir, thank you. I said, I don't know you. मैं तो जानता नहीं तुम कौन, कहां से आए, मैं तो भूल गया. इतने सारे लोगों से मिलता हूं मैं तो. And then he said, आप ऐसे ऐसे आए थे, ऐसा हुआ था, मेरे साथ अभी लाइफ में हो गया. He has published 3 books and those books are in the Harvard Library. And in the first book that he wrote, he actually wrote, thanks to Mr. Paresh Gupta for motivating me. And that was just one session. Now, imagine the time that I've spent with this fellow and how much has it taken. So yes, life is like that. And I think that's what I would want to say, that my vision for the world is also like this, okay? So I would say that India is a super populated country. We are number 1 at this moment. हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, थैंक्स टू देयर पेरेंट्स एंड थैंक्स टू द रोमांस बिटवीन देम. वी आर अ वेरी रोमांटिक कंट्री, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है. तो कोई कभी बोले इंडिया में ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, मैं कहता हूं हमारी पॉपुलेशन देख लो, सबका ऑर्थोडॉक्स तो निकल जाए, राइट? वी आर सुपर रोमांटिक एंड वी नो हाउ टू शो इट टू द वर्ल्ड दैट वी आर रोमांटिक. बट दैट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस नेशन टू. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी वही है, और अगर हमें उसको ठीक करना है तो हमारे को अपनी पॉपुलेशन को ना educated, intelligent population banana. Not literacy, but education and right knowledge. Forget about education also, not school, college and केवल college की degree नहीं, but what I want is people should be knowledgeable and smart, and we have to create sensible population who understands कि यार life में ना मतलब quality important है, quantity important नहीं है. And आप अच्छी quality create करो. आप सोचो अगर आपके इतने सारे लोग हैं उन सबकी quality बढ़ जाए और सबकी क्वालिटी एक्सेसिवली बढ़िया हो जाए तो आप कहां होगे? and that's for that what you need is to improve and work on the education system. We have to work on our family. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. In our daily family life, what is the conversation you are having with your kid? What is the conversation that you're having on the dining table is what matters and changes things, to be honest. आपके घर में क्या शादी की बातें होती है, रिश्तेदारों की बातें होती है, या फिर बिजनेस की बातें होती है, राइट? फाइनेंशियल लिटरेसी. मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, अब तो ठीक है, some of them have gone to college, बट आप बिलीव नहीं करोगे डिनर टेबल पे स्पेल भी खेला जाता है, राइट? मेरे घर की डिनर टेबल के ऊपर बिजनेस कॉन्वर्सेशन में बिजनेस असेसमेंट होते हैं. In fact, there is one conversation which I still so strongly remember, that we were talking and we spoke about LGBT issues on the dining table with the children in the room, and they had their opinions. And they were so, and they told us, why are you frowning like this? Why are you commenting and why are you making faces like this? You should learn to make it inclusive. We learned that from them. And that is exactly what we need to create. We need to have a society which is open to conversation. एक और बहुत interesting conversation हुआ. So there was one girl who was pitching about menstrual cycles to me. और she came to our college and she was like pitching कि menstrual cycle में pads होते हैं, उनको burn करने के लिए disposal के उसने एक product बनाया. वहां पे एक लड़का खड़ा होता है, अपना हाथ रेस करता है, बोलता है, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. आई वांट टू एक्चुअली नॉट टॉक अबाउट मास्टरबेशन बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट बॉयज. एंड इफ OMG2 कैन डू दिस, then why can't we all take it like that? And I think that is the way. I know, I don't know if I'm going out of place on this conversation, but I feel that these are genuine issues that we have to be open to talking about. These are fair issues that the world and the society has to talk about. So my 2047 will be a society which will not frown upon these issues. We will have a society which will not distinguish between कि मैं मेरी maid के साथ बैठ करके चाय नहीं पी सकता मेरी टेबल के ऊपर.
अगर मैं मेरे घर के ऊपर मेरे सफाई वाले के साथ, मेरी बाई जी के साथ में उनको सेम लेवल पे अपने पास बिठाकर डिनर नहीं करा सकता ना, मेरे से ज्यादा खराब इंसान कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा रेसिस्ट हूँ, एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई वांट टू हैव इन दिस सोसाइटी। एंड आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 20 minutes, I guess. Sorry, I was hoping to take lesser time, but yeah, thank you so much. I definitely loved talking to all of you guys. Let's open it to conversation. And thank you so much. Thanks a No, lot. sir, you just saved 2 minutes, just like an entrepreneur saves time. So yes, now we have given a good platform for the Q&A. So we have got the Q&A session is open. If anyone wants to ask, please raise your hand. We'll unmute you. Oh, I can see a lot of people have joined in the middle. Okay, wow. So if anyone has any question, then please go ahead. The Q&A session is open for 7 minutes. Akshay, I want to start if I get the permission. Yes, yes, please go ahead. Hello, Paresh sir. Hi. I'm gonna be the next one who is gonna say something like this. My entrepreneurship journey started with you, the startup Google Startup Weekend 2018. Wow. I am so glad and honored. So tell me, did I do something impactful or was I a disaster? Where is he gone? Yeah. I think he couldn't answer. That's why he could. He's dropped out. So, Rahul? no, My- no. If anyone else has, then please raise your hand. We'll unmute you. On entrepreneurial insights or any kind of one experience. raise. Noor. Noor sir, you're from US, yes. Hi Noor sir, please. Hello, hello, Mr. Paresh. Hello, Akshay. Thanks for organizing this. Enjoyed every bit of what you spoke about, Pareshji, and so good feeling that I joined this. I'm from the second batch. मेरी family lineage में तो business था, but I still went on abroad for my studies. I did my computer science, मैंने job किया, came back to India, and then वहाँ पर मैंने business चालू किया. Wow. 4 or 5 different businesses, some failed, some succeeded. One went on to become a 500-person company, exit किया उसको भी, and then went back to US and मैं वापस job कर रहा हूँ. Looking for my next venture. So, one of the purposes, मेरा आने का था, to listen to you and also to, see if, there are opportunities to network here and, get some insights. I'm here in the US. If I can be of any help or any collaboration wise, anything wise, I can do from here, I'll be very interested, to collaborate with anybody. So, question नहीं है, but it's just a general, जैसा आपने बोला था ना कि don't be afraid to speak out, so Yes. even if it doesn't make sense, just speak out, be there. So very, very motivating. Thank you so much. Noor is my classmate, my roommate. Hey, Mayur. Noor, it is great to see you here. Yeah, same here, man. Great. So I think मैं नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल सकता हूँ कि दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हाइल आई हैव वर्कड अक्रॉस बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब एंड डन दिस, कि आप जिस साइड ऑफ ग्लोब में हो ना, यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, एंड दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग. माय फर्स्ट पिचिंग सेशन, आई हैपन टू कम बैक फ्रॉम लंदन, और मैं एकदम सूट वूट पहन के गया था, तो मैं एकदम एकदम चकाचक बन के गया. और वहां पर जब मैं इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर रहा था, मेरे सारे इन्वेस्टर्स टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में बैठे थे. दिस वाज इंडियन एंजल नेटवर्क बैंगलोर, एंड दे वर ऑल सिटिंग इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, और मैं वहां पर ना सूट पहन करके लंदन टाई वाई लगा करके चला गया. एंड देन आई रियलाइज कि यार ये इंडिया है, एंड इंडिया में ऐसा इस तरह का एनवायरनमेंट इस जगह पे होता है. फिर मैं ना किसी कॉलेज के अंदर गया और मैंने ना मतलब उनसे टाइम लिया, 3 दिन बाद का उन्होंने टाइम दिया, 3 दिन 12 बजे आ जाना, तो मैंने बाकी कुछ फॉलो अप नहीं किया, एंड आई रीच देयर एट 12 o'clock sharp. And this guy was like, you did not follow up, you did not give me a reminder, I am not there in the campus, now come tomorrow. And I was like, how is it possible? It's a diary calendar invite already given, what is there to remind? Why can't you remember this? So I think ये एक बहुत important issue है कि we have to understand various cultural and backgrounds and local backgrounds while you're doing startups, and you have to understand that part of life, that how it goes, and only then you're good at your business and your work. So I think that's something which definitely comes to my mind. So let's do that, and I'm very happy to collaborate at any point of time.
Very, very nice point, sir. Absolutely amazing. So the Q&A session is open for the next 2 or 3 minutes. If anyone has, then please raise your hands. We'll unmute you. Everybody seems to be bored of me. Mayur sir is raising hand. Okay. Sir, Sushil. what in one of your video I've seen you have talked about giving free in India. That Indian people expect something free. So can you elaborate on that? So what has happened is that India is a freemium economy. So I think for all startups, they are being sold. So अभी इसको हम actually consumer honeymoon period बोलते हैं, right? और startup के jargon में इसका actually नाम ही honeymoon period है. तो इंडिया एक honeymoon period से गुजर रहा है, right? और जब भी कोई नया sector open होता है, उस time पे consumer को मजा आ रहा होता है. So for example, जब Uber Ola शुरू हुए हमारी country के अंदर, then we got a lot of free rides. So we got so many free rides across the country. People would get free rides and still free cash and everything came to us like that. Today they have become super giants. They've removed everybody, they've killed everybody, and now they're charging hefty money. And we can now see the pain. Similarly, when Swiggy, Zomato came in, they would give free food, free delivery, further discount, 80% off, 90% off, one extra food dish, everything was okay. Today, they would charge you even for 1 minute waiting time. They would actually charge you for one, the smallest of things, packaging charges, packing charges, hotel charges, this charges. They've started building that for us. So what happens is, when you're doing a startup and whenever that startup sector opens up, then in the beginning, what happens is there's a freemium thing. So there is an investor who would come into the market, who will pump in the money, try to eliminate and create monopoly kind of a situation. It will always be a duopoly, not a monopoly, because monopoly is not allowed by law. So you'll end up becoming a two. So you'll see always two companies, right? You'll be surprised, but Amazon was about to buy Flipkart, and Amazon did not buy Flipkart because they wanted to have one competition in the country. Because if competition nahi hoga, there will be a problem. So those are very critical, nuances. Now, if you are looking at a new sector, now, for example, the EV sector, or let's say EV charging station is going to come up very soon. You will see a lot of changes happening in the AI sector. Now, AI के tools अभी सब free हैं. आपको ChatGPT free मिल रहा है. आप अभी इसके आदी बनते जा रहे. So you start becoming addicted to AI. You'll start becoming addicted to a lot of these products, and this is going to happen. Once that happens, then they'll start charging you a little bit. And then they'll start charging you little. So that's called a freemium economy. And everywhere at the moment, we are going through that consumer honeymoon period. So a lot of customers would look for free products. Those who have money power, those who have funding backing will be able to sustain. ये इसलिए किया जाता है because बाकी competition को मिटाया जा सके. So this is a mechanism to remove and eliminate the smaller players, and only the large players can exist in the market. So yeah, this is the broad idea. Yes, Mayur. Sir, we at EDI are, we are people who are coming from family business background or people who are starting up without much of a funding. So, True. I can understand this predatory pricing of this, VC funded companies, but, this True. is actually not helping people like us. So how should we compete with these people? So I think if you can't compete, then the only answer is collaborate. And I think the best idea is, if you can't create another Amazon, become a reseller on Amazon, right? That's the best way of going about it. Don't try to compete with these big giants, So my vision for anybody would be, and my advice is, okay, some of you can, and if you can, please go for it, because you'll have to take them hands on, and you'll have to take the bull by his horns, and you'll have to go through that thing. Take the risk. 1%, 2%, 10% people will succeed, 90% will not. And if you can't, and if you want to have more stable, sustainable business, then keep pace with the time. So in fact, it has happened with me. I'm part of ASSOCHAM, I'm a part of CII. I go to all these conferences. वहाँ पे आके literally मुझे सारे लोग यही बोलते हैं कि यार हमारा business तो Amazon ने खा लिया, Flipkart ने खा लिया, इसने खा लिया, उसने खा लिया, इसने खा लिया. आपके पास एक ही रास्ता है. You also adopt technology as fast. You become a collaborator with all of them. So आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं Amazon पे अपना बेस्ट कैसे बेचूं. आपको तो उससे मतलब है ना. Please don't try to get into a market. So say for example, आज मुझे किसी को फंड करना है, मैं कभी भी कार इंटरसिटी एंड इंट्रासिटी कार राइड बिजनेस को फंड ही नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर वो दोनों रहने वाले. अब क्या आप उबर और ओला के सप्लायर बन सकते हो? आप अपनी गाड़ियों का फ्लीट उनको दे दो ना. दे आर वेरी हैप्पी टू गिव यू बिजनेस, एंड दे विल रिक्वायर दैट. सो इट्स अ बेटर मैकेनिज्म, and that is exactly how world will move. I'll tell you one more thing. As far as all predictions are concerned,
And that's a very alarming situation. Let's be very honest about this. But this alarming situation is that smaller players will be out of the market in the next 20 years. And we will see a lot of SMEs dying. And that's a proven prediction by at least 80 to 90% of the market experts of the world. So आप किसी भी तरह से देखोगे, सारे बिजनेस एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि बहुत सारे एसएमईज बंद होंगे बिकॉज कंसोलिडेशन होगा. आप अक्वायर हो जाओ, यू सेल योरसेल्फ, एंड यू शुड आल्सो नॉट बी सो स्टबर्न अबाउट कि मेरा बिजनेस है तो मैं हमेशा इसको ऐसे होल्ड करूंगा. आपको पैसा कोई दे रहा है, आप अपने बिजनेस को बेचो, अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ एंड मूव टू द नेक्स्ट वन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग एल्स. सो दिस इज अनदर आइडियोलॉजी दैट हैज टू कम इन. बट दीज आर दी ओनली सॉल्यूशंस दैट आई हैव. मतलब मेरे पास यही 3-4 सॉल्यूशंस हैं जो असली में वर्क करते हैं. उसके अलावा आप अगर एनलाइटन करो तो आई एम हैप्पी टू लिसन टू यू. सर, यू हैव इन अ वे टोल्ड दैट कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. आप अपना काम करते रहिए, डोंट बी अटैच्ड टू योर एंटरप्राइज. ये तो है सर. अटैचमेंट टू योर एंटरप्राइज विल नॉट हेल्प. सो बिजनेस इज, हमें तो सेपरेट लीगल एंटिटी पहली क्लास में सिखाते हैं ना सर बिजनेस की, कि बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी. आप बिजनेस नहीं हो तो बिजनेस अलग है, आप अलग हो. अपने आप को उससे दिल से जोड़ोगे तो बिजनेस कभी नहीं करोगे. तो बिजनेस से प्यार नहीं करना चाहिए, बिजनेस से बिजनेस करना चाहिए. Sir, we have like 3 more questions coming up. Sushil sir, Let's do it Yuvan ji, faster. and Sure. Shraddha ma'am. So Sushil sir, please go ahead. जी. No, namaskar Paresh ji. It was good to have you here, and there was very insightful sort of things which you told. Now, एक चीज है जो I think even you will be not able to describe that so much right now here, but आगे कभी भी ऐसा मौका मिलता है, or if you have some sort of other sessions like that, then definitely I want to join that. बोलने में बहुत आसान है. आपने जैसे 2 उदाहरण दे दिए. हो सकता है आपने 100 लोगों को बोला हो नेटवर्किंग करने के लिए, उसमें से 1-2 ये सफल हुए हों, उनका उदाहरण आपने यहाँ पे दे दिया. लेकिन networking is not that much easy sort of thing that you will go and do networking and you will going to be successful. It is not that much easy sort of job, you also knows. True. So अगर इस तरीके का ऐसा कोई, because सबकी अपने अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं ना, और सब उतने अच्छे ढंग से इफेक्टिवली नेटवर्किंग कर सकें, it is also an art and science. तो अगर इसका कोई आपके पास कोई प्रूवन तरीका हो सकता है कि कोई यूनिवर्सल रूल टाइप में ना हो, लेकिन फिर भी टेस्टेड एंड ट्राइड हो सकता है उससे लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे जैसे लोगों को. एंड एनीवे, आई एम नॉट अ बिजनेस ओनर, आई एम अ सोशल वर्कर, आई वर्क विद एनजीओज. सो लेकिन नेटवर्किंग इज नेटवर्किंग, हर जगह उसकी आवश्यकता है. एक दूसरे से मिलके जो काम हो सकता है, निश्चित रूप से अकेले आप कितने भी प्रतापी हो, कितने भी आपके पास गुण हो, लेकिन आप उतना सब कुछ नहीं कर सकते जितना आप लोगों के साथ मिलके कर सकते हैं. सो अगर आपके पास ऐसा कोई एक तरीका हो या आपने कुछ उस पर रिसर्च किया हो, सो आई थिंक अक्षय जी, हम लोग एक दूसरा सेशन भी इसके लिए रख सकते हैं, ओनली फोकस्ड ऑन नेटवर्किंग. सर मैं एक काम अगर वैसा करूंगा होगा कि तो बहुत अच्छा रहेगा. परेश सर का ईमेल आईडी आपसे शेयर कर दूंगा, परेश सर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, है ना. जी, Thank you. धन्यवाद. Then we have. I will sorry, I'll just answer Sushil ji. आप पहली चीज तो आप इतनी अच्छी बातें कर लेते हो तो मेरे को लगता नहीं कि आपको नेटवर्किंग की कोई कमी है. So let's be very clear about this, है ना. दूसरा चीज ये कि जो कुछ आपने किया वही आपको दूसरों को बताना है, और आपने जो किया मैं आपको बता देता हूँ कि केवल आपने अपने आप को कंट्रोल करके पुश करके बोला मेरे को तो बात करनी है, और अगर ये आप इसकी जिद बना लोगे, आप पैशनेट हो गए और आपने सोच लिया कि मुझे करना है, तो वो जरूर होगा. बाकी इंग्लिश आए चाहे ना आए, लिंक्डइन आए चाहे ना आए, सब कुछ होता है सर, बस केवल हमारे दिल की इच्छा होनी चाहिए. दैट इज द ओनली रेसिपी ऑफ नेटवर्किंग, दैट यू शुड बी पैशनेट. मुझे करना है तो फिर जरूर होगा. धन्यवाद. लेकिन इसमें और थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे. Sure sir, sure, most welcome. Yes. On next we have like Shraddha ma'am raised hand. Please, one question, please. Yeah. Hello. Yes, sir. It was very inspiring and I really enjoyed the session. I'm from the 4th batch, passed out. I have one question, like India is really now coming up on a global platform, and we all are entrepreneurs and really having a lot of challenges each and every day. But at the same time, we all are having aspirations to do and expand ourselves. So how do you see that, how as an entrepreneur we can develop the second leadership in our own organization, which can help us, and we can delegate and they can own it, because people management is really crucial, and I think every one of us is finding it very challenging.
Yeah. I think it's a very good question, and I think ये ना मैं मेरी टीम को रोज सिखा रहा होता हूँ. आप सही बिलीव, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता. और मैं अपनी टीम को केवल एक चीज बोल रहा होता हूँ. लिटरली क्या होता है ना, आप कोई चीज कर रहे होते हो ना, आपको लगता है आप बहुत अच्छा करते हो, राइट? तो अब आपको लगता है मैं ही अच्छा कर सकता हूँ. फिर आपको एक टीम दे दी जाती है और बोला जाता है इससे करवाओ. फिर वो उतनी अच्छी नहीं होती जितने आप होते हो. तो यू आर वे मोर एफिशिएंट देन द रेस्ट ऑफ द टीम. सो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज, यार इसको छोड़ो मैं ही कर देता हूँ, इसको छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ. यू नो, दैट्स व्हाट my team ends up doing. It's a daily story for everybody that, you know, we always would not be able to develop the second line because we feel we can do it better, let's do it. जितना टाइम उनको सिखाने में लगेगा उससे कम टाइम में हम काम करके निकल जाएंगे. And at that time we are always having work pressure. So वो work pressure के टाइम में हमें लगता है इस टाइम के momentarily efficiency के लिए we would, you know, actually give that up. And my answer is yes, it costs time, effort, money to train a team, but it is worth the investment. एंड आपका जॉब, मतलब मैंने तो अपनी सारी जॉब की जिंदगी और बिजनेस की जिंदगी में एक ही काम सोचा है कि मेरा काम है पहले बिजी होना और फिर फ्री होना. उसी काम से फ्री होना ही स्किल है एक्चुअली. So how to become free? So your job is how to become free, how to become free, how to become free. And you can only become free when you can actually find somebody else to do it. अब वो कैसे करवाना है आपका प्रॉब्लम. So then you will start training people because you need time. So आप ये बोलो मेरे को तो काम करना ही नहीं है, जब तक वो थॉट नहीं आएगा ना कि मेरे को फ्री टाइम चाहिए. When we talk to any startup founder, we tell him you should not be working. You are not. If you are working, then you can better hire an employee and pay him the money and that's it. Otherwise, I should give you salary and that's about it. So it is about freeing your time. So आप ये समझो कि जब भी आप किसी को लीड करो उसको बोलो फ्री, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री दिखो. बिकॉज जितना फ्री होंगे उतना ज्यादा फिर आप उनको दूसरा काम देते जाओगे और आप भी अपनी टीम को ट्रेन करते जाओगे. तो एक माइंडसेट है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, please give them that, take some risk. It is okay to take calculated risk. It's okay to have failures. It is okay to make them make mistakes. You know, हम भी बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने गलत क्यों कर दिया. You know, ये तो इतना आसान था. So I think we have to give them that, you know, leverage. We have to give them that guidance and they'll grow. Everybody is intelligent. I've seen, you know, जो दिखने में dumbest of लोग दिखते थे मेरे को आज वो इतना amazing कर रहे हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं. So मुझे लगता है I have so much to learn from them. So if you give them the opportunity, they become wow. And I've seen people becoming wow. तो आप बस ये सोचो कि मेरे को फ्री होना है रोज. And I think your problem will be solved. Super answer. Thank you. Thank you. Good answer. Yes, I think we have just final 2 questions from Yashovardhan Kothari and Manish Agrawal. Yes, please. Hello, sir. Firstly, I would like to say you have got brilliant thoughts about the society and everything. It opened my mind about things that are happening in India and everywhere else in the world as well. So I'd like to ask you a question that I'm facing in my personal life. I am a young entrepreneur. I'm just 23 years old. I've just graduated from EDI this year and started doing my own business, joined my family business as well. And when I go up to people about talking about my business, talking about the things that I've done, although I've been working since past 4 years, since the age of 18 and a half, but people tend to think कि यार ये तो बच्चा है, इसको क्या आता होगा. So how to cope up with those problems? मतलब I know a lot of young entrepreneurs face these problems, and I'm sure many of these entrepreneurs here have faced these problems as well in their past. I think it's again a brilliant question, and you know, I would love to answer because I faced the same problem. I was a child prodigy. I got into a job at the age of 21, 22, जबकि मेरी पूरी कंपनी के अंदर बाकी सारे लोग 28 प्लस थे और मैं उनसे 5-6 साल छोटा था सेम लेवल के ऊपर. So when somebody would look at me, they're like, ये तो बच्चा है, right? Or I have tried to improvise this. I can tell you, and आज के दिन, see, you are still at a better age, trust me. तुम मुझसे प्रीवियस, मतलब इफ यू कम टू माय जनरेशन, हमारी जनरेशन में और बड़ा प्रॉब्लम था कि एज वाज सच अ बिग फैक्टर. यू नो, बिलीव मी, यू कुड नॉट इमेजिन अ यंगर पर्सन बीइंग योर बॉस एवर. यू वुड नॉट टेक इट मेंटली. यू आर नॉट रेडी फॉर दैट. एज वाज द डिसीजन क्राइटेरिया फॉर इंटेलिजेंस, व्हिच इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल. सो आज की डेट में तो मैं, आई नो फाउंडर्स who are 16, 17, 18 years of age and doing exemplary business. वो जाके फंडिंग रेज करके आ रहे हैं. So one part is you have to be confident. Number 1, be confident about what you say. और मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं ना छत्तीसगढ़ में एक काम कर रहा था. मेरे सामने एक क्लाइंट थे जो कि बहुत सीनियर थे. ही वाज लाइक अ 60-65 year old gentleman, very senior, very experienced.
और उन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और मैंने कुछ एक आंसर दिया, एंड ही स्टार्टेड फ्राउनिंग एंड ही सेड तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने कहा सर मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपने फैक्ट्स चेक करो, राइट। ही पुल्ड आउट अ बुक फ्रॉम हिज लाइब्रेरी एंड ही सेड देखो मैं तुम्हें बुक दिखाता हूं, और उसने बुक खोली और उन्होंने ऐसे ऐसे खोल करके दिखाया, देखो ये है। फिर मैंने कहा सर ये बुक हो गई आउटडेटेड, इसकी प्रिंटिंग की डेट आप जरा चेक करिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इंटरनेट। और फिर उसके ऊपर आई पुल्ड आउट द लेटेस्ट रिविजन टू दैट डॉक्यूमेंट एंड देन आई हाईलाइटेड सर देखो ये असली सच्चाई है, राइट। एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एवरी सिंगल वर्ड दैट आई वुड से। सो यू हैव टू प्रूव इट। और ये हर किसी की जिंदगी का ये एक चैलेंज है कि आप धीरे धीरे प्रूव करते जाओ। आपके पास जितने प्रूफ्स होंगे उतना ये प्रॉब्लम एलिमिनेट होता जाएगा। इट कैन नॉट हैपन इन अ डे, इट कैन नॉट वैनिश इन अ डे, बट गिव देम प्रूफ्स। भाई आपने ये प्रूव कर दिया, मैंने ये कर चुका, मैं ये कर चुका। तुम जाकर बोलो ना मेरे 30,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, बताओ कैसे तुम्हारे को, वो खुद बोलेगा यार ही इज बेटर नेटवर्क देन आई एम, he is a bigger profile than I am। तुम बोले यार मेरा इतना टर्नओवर है। आज अभी मैं एक इन्वेस्टमेंट फोरम में था जहां पर हमने एक स्टार्टअप से क्वेश्चन पूछा, हमें नहीं लगता तुम्हारा बिजनेस चलेगा। उसने कहा सर मेरा तो 8 करोड़ का रेवेन्यू है, पैसे नहीं चलेगा, मेरा तो चल रहा है। वी वर लाइक शट, भाई चल रहा है तो भाई मतलब he is better than what we are, right? And you have to shut those people by your work, and that's the right answer to this question. Don't worry about it, be confident, go ahead। and मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे पास जो abilities है ना हमारे पास नहीं है। तुम young entrepreneurs जो कर सकते हो ना, वो मैं बताऊं क्या कर सकते हो। तुम जितना रैश डिसीजन लेकर के अग्रेसिव डिसीजंस ले सकते हो ना, हमारी औकात ही नहीं है। हम डरपोक है, हमें डर लगता है, हमें ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। तुम जितनी रिस्क ले सकते हो हम ले ही नहीं सकते। तो तुमको इतना बड़ा एडवांटेज है कि तुम इसको लेवरेज अगर सही डायरेक्शन में कर गए ना, यू विल बी सुपर फैंटास्टिक। सो डू नॉट बी स्कैर्ड एंड वरीड फॉर दिस, यू विल बी ग्रेट यार, डोंट वरी यार, आई एम वेरी श्योर अबाउट। Thank you very much, sir. Thank you. Superb question from family business point of view and superb answer, really extraordinary. Now let's have a question from Manish sir, Manish Agrawal ji, please. जय श्री राम सबको। एंड परेश जी नमस्ते। नमस्ते। बनिया भाई भाई। मैं आज इसी के लिए बैशिंग खा के आया हूँ, आपको पता नहीं है। मैंने बोला मैं मारवाड़ी अग्रवाल साहब इतना पीछे पड़ गए, मारवाड़ी की क्यों नाम ले रहे हो, बाकी भी लोग बिजनेस अच्छा करते हैं। सर 2-3 क्वेश्चन थे, क्विकली आपसे पूछता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क राइट नाउ। आज के जमाने में तो बिल्कुल सही बात है, उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब एक सबसे बड़ा आपके लिए हेल्पफुल टूल है ये। सेकेंडली सर, आपने जैसे कहा कि काम करो और निकल जाओ, अमेज़न की कुछ बात करते हुए कि छोटे बिजनेसेस नहीं रह पाएंगे। तो अब टॉकिंग अबाउट मी, आई एम इनटू लॉजिस्टिक्स बिजनेस। मेरा फर्स्ट ईयर का ही रेवेन्यू 12 करोड़ रुपए था। एंड अब मैंने कभी इन्वेस्टर से बात किया तो इन्वेस्टर ने ये बोला कि आगे फ्यूचर में क्या है, कंपनी बेचना चाहता है क्या नहीं बेचना चाहता, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा कंपनी के अंदर। तो मैं अंदर से ये सोचता हूँ कि मैं क्यों कंपनी बेचूं, ये बेच के मैं, अगर मेरी एक्सपर्टीज ही लॉजिस्टिक्स में है तो फिर मैं ये बेच के और करूंगा क्या फिर। दो क्वेश्चन है सर। हेलो, ये ऑप्शन है हमारा। विजय राघानी जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? या प्लीज। हाँ, तो सर क्या हम मतलब बैंक से फंडेड पैसे से हम ग्रो नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि भाई बेच के, अपना बिजनेस बेच के कहीं आगे निकल जाओ, और उसके बाद हमने अगर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं, तो क्या वापस से लॉजिस्टिक का नया स्टार्टअप करेंगे? क्या करना चाहिए फिर ऐसी सिचुएशन? सो आई थिंक बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऑनेस्टली, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपफ्रंट आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस इन डिटेल शायद नहीं दे पाऊंगा, बट आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स टू थिंक अबाउट। ओके, देयर आर सर्टेन बिजनेसेस व्हिच आर कॉल्ड बिजनेसेस एंड देयर आर सर्टेन बिजनेसेस व्हिच आर कॉल्ड स्टार्टअप्स, एंड स्टार्टअप इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिजनेस। और वो डिसरप्टिव या इनोवेटिव होते हैं जहां पर हम मार्केट को ही तोड़फोड़ मचाने के लिए बैठे हैं, राइट। और अगर हमारा बिजनेस वैसा है तो हमें कभी भी उससे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी वो कर ही नहीं पाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है यार, एक बार मिल रही है, लेकर के आपको लगता है ये राइट टाइम है, सही वैल्यूएशन मिल रहा है, निकल लो, दूसरा बनाएंगे। विल क्रिएट अनदर स्टार्टअप इफ एट ऑल इट कम्स टू दैट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे 50,000 लोग कर रहे हैं, 500 लोग कर रहे हैं, आप फैशन इंडस्ट्री को देखो, आप फैशन इंडस्ट्री में इतने सारे अपैरल्स इंडस्ट्री के लोग आए हुए, पर आप हर दिन एक नई कुर्ती डिजाइन कर सकते हो। इट इज सच एन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट दैट अनदर कुर्ती प्लेयर विल आल्सो सर्वाइव बेस्ड ऑन हिज पर्सनल abilities only.
सो अगर आपका बिजनेस वैसा है जो कि अनऑर्गेनाइज मार्केट में और उसमें मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देयर इज अ प्लेस फॉर यू आल्सो। बट कोई ऐसा सेगमेंट है जहां पर आउट ऑफ ऑल से, अभी मैं एक स्टार्टअप को इवैल्यूएट, हम एक आई वाज इन अ पिचिंग सेशन ओनली, वहां पर हम हाइपर लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। अब आज की डेट में पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी में हाइपर लोकल इंडस्ट्री में कोई पैसा डालने को रेडी नहीं है, एडटेक इंडस्ट्री में कोई पैसा डालने को रेडी नहीं है, राइट? बिकॉज दीज सेक्टर्स हैव सैचुरेटेड। सो अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में हो जहां पर ये उस तरह का मोनोपोली बिजनेस बनने वाला है या डुओपोली बनेगा जहां पर वो स्टार्टअप 2 ही लीडिंग प्लेयर्स होंगे, तो फिर अच्छा टाइम है, निकल लो। सो यू शुड हैव दैट फोरसाइट टू स्टार्ट थिंकिंग यार मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन डिटेल मैं इसका आंसर अपफ्रंट नहीं दे पाऊंगा। लॉजिस्टिक्स में 50 चीजें हो रही है। देयर आर tech businesses which can be disruptive in the market, some are standard logistic businesses which are going to continue as it is। अब जैसे ट्रक्स का बिजनेस है, फ्लीट का बिजनेस है, आपके पास फ्लीट से आप लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से शांति से अपना बिजनेस करते रहो, चकाचक पैसा कमाओगे, मतलब कोई चैलेंज ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो जो कि सारे ट्रक्स को इंटीग्रेट करेगा, उसके 2 ही प्लेयर्स 3 प्लेयर्स मैक्सिमम रहने वाले, बाकी सब बर्बाद होंगे, गारंटी मेरी है, राइट? So can you be the top 2? बट उसका रीजन क्या उनके पास पैसा जो फंडेड है, फंडिंग की वजह से, फंडिंग की वजह से ही होगा। सो जो फंडिंग वाला होगा वो बाकी सबको हटा देगा मार्केट से। सो आप ये देखो ना, आप एयरपोर्ट पे आज से 7-8-10 साल पहले जाते थे ना, 15 अलग अलग कैब्स आपको मिलती थी, येलो ब्लैक भी मिलती थी, ब्लू सिल्वर भी मिलती थी, 2-4 एप्स भी रहते थे, फिर एक माई कैब, ये कैब, वो कैब, 50 कैब रहती थी। आज आप जाओ एयरपोर्ट पे, है ही नहीं कुछ। You only find Uber and Ola, that's about it. They have killed everybody else. Short to kill everyone. And now they charge. Sorry, yes. Sorry to interrupt. Can we please conclude this answer, because Satya sir is also come in. He wants to connect. Sure. So I think that's the answer to your question. That Manish sir, I'll connect you personally with Paresh sir also. I'll give his contact details to you. Thank you so much. Yes, thank you so much. I'll whoever wants to ask question or has any query, I'll share the contact of Mr. Paresh Gupta with you. You can do it, है ना? So do we have Mr. Satya Acharya, the Director of Department of Entrepreneurship Education, EDI Ahmedabad? If he's here, I would like to invite him. Satya sir, are you here, please? In between he joined, I think now he is. Oh, no issues. Whenever he'll join, we'll invite. So yes, it was like a very exceptional session. So let's conclude the Q&A session right here. So Paresh sir, your session turned out to be an absolutely enriching and amazing one. And it's really an honor for us to have an iconic entrepreneur and mentor like addressing our EDI Alumni Association. So we also thank Mr. Krishan Mishra, our senior alumni and one of the most recognized alumni for 4th batch, for recommending your name for today's session. And on behalf of the entire EDII Association and the committee, I thank you so much for being here with us. So now we'll move on to the next best part of the evening, the most awaited part of the evening, business networking session. Thank you so much. And I must say that it was lovely interacting with all of you guys. Same here. I can be reached out on LinkedIn any point of time. I'm Paresh Gupta for everybody who can't still see my name. So if you Google my name, all top 100 results are mine. I'm just trying to flaunt a little, but but yes, please feel free to reach out to me any point of time. I'll do whatever best I can do for everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Paresh.